Hello, good morning. So, what is the topic of Bunny? Yes, Mr. Bunny, what is the topic? Yes, brick by brick is our topic. So, let us start. Now, open your book, brick by brick, class 6. Open it. Okay, the first chapter is Delightful the Bull. Delightful the Bull. Okay, read. Once upon a time, in a city in northern India, there was a calf. Once upon a time in northern city, there was a calf. It is calf who was bought by a rich man. Who was bought by a rich man. And who is rich man? He is rich man. And what is the name of rich man? Rich man name is Ghanshyam, and its name is Delightful. Okay, its name is Delightful. Yes, calf name is Delightful. In this story, they love to each other very much. They respect to each other very much. And then, when Delightful grew up into a big, fine, strong bull, now it became bull. He thought, means the rich man, Ghanshyam thought, when Delightful grew up into a big, fine, strong bull, now it became bull. Okay, so he thought, the bull thought, I was brought up by my master. Who is master? Yes, Ghanshyam is master. A very generous man. He gave me food and care. Now I must give something in return to him. वो सोचती है, जो डिलाइटफुल है, वो सोचता है कि मैं अब क्यों ना उसको रिटर्न करूँ कुछ एज अ गिफ्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, मैं मास्टर ने मुझे इतना अच्छा बिहेवियर है. So he said, Sir, please find some wealthy merchant who is proud of having money, strong bulls. और वो उनसे किसी मर्चेंट को ढूंढने के लिए कहते हैं, और जिनसे मतलब जिनके पास बुल्स हो और वो अपने बुल पर प्राउड करते हो. इसलिए चैलेंज हिम बाय सेइंग दैट योर बुल कैन पुल 100 heavily loaded bullock carts. So bull carts. So challenge him. तो घनश्याम फाउंड सच अ मर्चेंट. घनश्याम ऐसे मर्चेंट को ढूंढ लेता है एंड सेड टू हिम, सर, आई हैव अ बुल who can pull 100 heavily loaded bull carts. Okay, next, no, there can be no such bull. वो कहता है कि ऐसा कोई बुल नहीं जो 100 जो बुल कार्ट्स है वो उसको खींच सके. said the merchant, but I do have a bull like that. I am ready to bet 1,000 gold coin that my bull can pull so many bull carts, said Ghanshyam. और घनश्याम उनसे बेट लगाता है कि 1,000 gold coin की. How many gold coins? Yes, 1,000 gold coins. Now take the correct. Delightful the bull decided to help his master because वो क्यों डिसाइड करती है मास्टर की हेल्प करने की? बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज मास्टर हैड लुक आफ्टर हिम थ्रू आउट हिज लाइफ. यस और नो? ही फेल्ट दैट हिज मास्टर वॉज पुअर एंड नीडेड हेल्प. यस और नो? फर्स्ट और सेकेंड? यस, फर्स्ट. सो टिक द करेक्ट फर्स्ट. नेक्स्ट, डिलाइटफुल वॉज शॉक्ड when his master spoke to him rudely because his master's were too loud. His master had never spoken such harsh word to him before. मीन्स जब डिलाइटफुल के मास्टर उसको हार्श वर्ड बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, तो शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्यों हिज मास्टर्स वर्ड उसके बहुत बुरे लगते हैं, इसीलिए, या फिर हिज मास्टर हैड नेवर स्पोकन, इस तरह के उसके मास्टर ने कभी वर्ड बोले नहीं थे. यस, कभी इस तरह के वर्ड नहीं बोले थे. राइट, टिक द करेक्ट. नेक्स्ट, द मर्चेंट फिल्ड द कार्ड्स विथ सैंड बिकॉज मर्चेंट फिल कर देता है कार्ड्स को सैंड के साथ बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर द बुल.
बुल के लिए डिफिकल्ट बनाना चाहता था टू पुल द 100 कार्ड्स, या he had or he had no other material to fill the card, या उसके पास कोई और मटेरियल नहीं था. एक्चुअली वो डिफिकल्ट बनाना चाहता था, इसलिए वो फिल करता है. सो टिक द करेक्ट. सो डू इट फास्ट. The bull decided not to pull the cards because he was feeling nervous and tired that day. No, he was hurt at being treated with disrespect by his master. So do it now. Take the correct right. Yes, second, he was hurt. And next, the merchant was happy to accept the bet for the second time because he was going to leave the city soon and needed money. No, he was sure the bull could not pull the 100 cards, so he would win the bet and make more money. उसको ये लगा कि वो दोबारा से जीत जाएगा, इसलिए उसने दोबारा बैट लगाई. Right? Do it now.